जी जी स्टूडेंट्स तो ये हमारा प्राइड एंड प्रेजुडिस पे अब नेक्स्ट डिस्कशन चलेगी। तो हम देख रहे थे कि कॉलिंस एंड Charlotte Lucas are going to be married. Charlotte Lucas has accepted Colin's proposal, and this is really going to be an ill-matched couple, because Charlotte Lucas is very pleasant in her temperament. She is a sensible girl. On the contrary, Collins, as I have already told you, that he is a quite vulgar person. He doesn't know the art of communication, art of discussion, art of talking to others. But one thing that has allured Charlotte Lucas is that Collins enjoys a good worldly status. He has a beautiful house to live in and the sufficient income to live on. Now, the marriage, when Elizabeth raises the objection on the choice of her friend Charlotte Lucas, she says, I know I'm going to marry an ass, but still she is ready to marry an ass. She knows she is going to marry an ass, but still she is ready to marry an ass. It's only his wealth, his magnificent house, his superb social status that has allured the lady to marry the person whom she takes as an ass. जिसे वो ऐस समझती है, गधा समझती है, उससे शादी क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास पैसा है. So another marriage is going to be formed on the basis of wealth. The marriage has taken place. They are married now, married to each other, but still all the Bennet sisters are unmarried. And the worries of Mrs. Bennet are still alive. She is still worried, but she is satisfied on one sense, that at least her one daughter, which one? Jane, is going to be engaged to whom? Mr. Bingley. Yeah, Mr. Bingley. Okay. Yeah, students, now, Mr. Bingley has two sisters. One is married while other is unmarried. Never forget the names of the characters, okay? You must keep always the names of the characters in your memory. The married one is Mrs. Caroline Bingley. The married one is Mrs. Caroline Bingley. Mrs. Hurst. And the unmarried is Caroline Bingley. Caroline एक दफा लगता है शायद किसी दवा का नाम है. कैरोलीन, पेंसिलीन, है ना? ये लीन ग्रुप दवाइयों का. Caroline Bingley and Mrs. Hurst, they are two sisters.
Mrs. Hurst is a married lady and Caroline Bingley is unmarried. But as far as Bingley's sisters are concerned, they are also not the civilized persons. They are also, they are not civilized persons. They are incivil. You can call them you can call them vulgar to some extent. One day, Bingley's sisters send Jane a note. They send Jane a note and invite. This note is what? This is an invite. This is an invite. They invite Jane to visit their home. Bingley's sisters invite Jane to visit their home. आइए हमारे घर आइए, आइए हमारे घर आइए, आखिर इनकी होने वाली भाभी है, शायद ये भी जहन में आ चुकी. Am I clear? So Jane goes to her mother with a note in her hand and says, "Mother, this note is an invite, and this invite is from Bingley sisters. They have invited me to visit their home. So can I seek your permission? Now just tell me. I want to scan your understanding, your common sense. Is her mother going to allow her or not? What about the rest ones, the silent students? They are always silent. What about Jane's mother? What do you think? Will she allow her to go? Why will she allow her to go? Yeah, she is greedy and vulgar. You have used beautiful adjectives for Mrs. Bennet. Greedy and vulgar. Greedy for what? Sorry? Greedy for? Marriage? Wealth? Okay. And also greedy to marry her, greedy to get her daughters married as soon as possible. How Jane receives a note from, who does she receive the note from? Not Collins sister. किसकी तरफ से नोट इसे मिलता है? बिंगले सिस्टर्स की तरफ से नोट मिलता है. बिंगले सिस्टर्स ने क्या कहा है उस नोट में से? हमारे घर विजिट करो. अभी अपनी अम्मी के पास गई इजाजत लेने के लिए. And my question was, will she able to seek permission from her mother or not? And some students who are very good and all efficient students have responded quickly that she will easily be able to receive the permission from her mother. Yes, mother is very happy. Yes, go as soon as possible, Jane. What are you doing here? You should have been there right now. Okay, mother. So Jane has gone to Bingley's house. Bingley's house is situated some 3 or 4 miles away from Bingley house, from Bennet house. Bingley's house is situated some 3 or 4 miles away from Bennet house. Okay? So she goes. It's a chill cold when she goes. So she is received warmly.
आए हो अभी, बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो। इस तरह उसका इस्तकबाल होता है। In a beautiful and pleasant environment, she is received warmly by Bingley sisters, by Mr. Bingley especially. तो ये किसी के कहने पर सिस्टर्स ने बुलाया होगा। किसके कहने पे बुलाया होगा? रॉयल बिंगले की फरमाइश पे बुलाया होगा। ओके, करनी खुदा की ये हुई कि here it rains heavily. As soon as she receives there, she reaches there, here it rains heavily. बारिश हो गई। तो बिंगले यकीनन कहता होगा कि ऐ अब्रे करम, थम थम के बरस, इतना न बरस के वो आ न सके, वो आ जाए तो जम के बरस, और इतना बरस के वो जा ना सके। He must be thinking so. He must be thinking so. Now, बारिश की वजह से, सर्दी की वजह से Jane is stricken by the cold. She is stricken by the cold. इसे सर्दी लग गई, ठंड लग गई, बुखार हो गया, नज़ला हो गया, और बिंगले को पता चलता है कि मोहतरमा बीमार हो गई हैं। इसके पास आके पूछते हैं, हाउ आर यू डियर, कैसी हो? कहती है उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हाल तो वैसे ही है, बस आपके आने से जरा मुंह पे रौनक आ जाती है। Okay, so Mr. Bingley has become a nurse for Jane. Next day, she cannot go home. उसी दिन ही another note is sent to Bennet's house. In that note, Bingley's sisters have called Elizabeth to come and look after Jane. ये एक और नोट भेजती हैं। कहां पे भेजती हैं जी? कहां पे भेजती हैं? बेनेट हाउस में। क्यों भेजते हैं? कि एलिजाबेथ को भेजिए, वो अपनी बहन की जरा देखभाल करे, वो बीमार हो गई। नाउ सॉरी, अब वो रात जा नहीं सकी ना, अब नहीं जा सकेगी, रात बीमार ज्यादा है। अब ये जेन एलिजाबेथ ये नोट लेके अपनी मदर के पास जाती। Fortunately, Darcy is also there. Darcy is also staying at Bingley's house. अब मसला ये है कि डार्सी की जो एक बिंगले की जो एक सिस्टर अनमैरिड है, she is tempted, deeply tempted, badly tempted, extremely tempted by Darcy. उसे डार्सी बहुत अच्छा लगता है, इसे डार्सी बहुत अच्छा लगता है। डार्सी को अब एलिजाबेथ अच्छी लगने लगी है। एलिजाबेथ बताती है अपनी मदर को, उसकी मदर कहती है हाँ हाँ जरूर जाओ, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती। दबे दबे लफ्जों में जेरे लब कहती अम्मी आपने क्यों जाना है? कहती चले।
So now both mother and daughter go to Bingley house, but on the way the path and the way is muddy. The ground is muddy, कीचड़ ही कीचड़ है, and their shoes become dusty and muddy. When they reach Bingley's house, their shoes are full of mud. First of all, Bingley sisters laugh at Elizabeth's shoes. Oh, तुम्हारे तो जूते बहुत गंदे हैं. They laugh at होते मजाक उड़ाना. Okay. Anyways, डार्सी उसे देख के खिल जाता है अचानक, जैसे खिजा के फूल पे बहार आ गई. वो यू एलिजबेथ, यू लिजी, यू. अब लिजी का मुंह बना हुआ है. क्यों बना हुआ है? प्रेजुडिस्ड है अभी तक. शी इज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट हिज प्राइड. She is prejudiced against his pride. As he says, how are you? Fine, I'm fine. Okay. बस कहता है जनाब कि हम हैं मुश्ताक. हाँ जी. और वो बेजार. इलाही ये माजरा क्या है? इलाही आमीन नहीं. हम हैं मुश्ताक और वो बेजार. इलाही ये माजरा क्या है? हम हैं मुश्ताक और वो बेजार. इलाही ये माजरा क्या है? बाद में it is decided that they will play at cards. They will play at cards. ताश खेलेंगे. ताश खेलते हैं. ताश के दरमियान इनकी थोड़ी इंटीमेसी बढ़ती है. इंटीमेसी क्या होता है? हाँ जी. कराबतदारी, कुर्बत, बेतकल्लफी. तो जब आदमी करीब होता है तो बेतकल्लफी बढ़ती है ना. रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए. हाँ जी. पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए. बेतकल्लफी क्या था वो? हद से बड़ी तो सारे फासले मिट गए. पहले आप और फिर तुम और फिर तू का उन्वा हो गए. कुछ ऐसा ही है ना. बारह अभी तू तुम तक तो बात नहीं आई. अभी आप जी वो तक ही है बात. वो जॉन एलिया कहते हैं ना, आप जी वो, मगर ये सब क्या है? क्या कहता है जी जॉन एलिया? आप जी वो, मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? ये खवातीन का आपको पता ही है ना जी. वो आपके भाई आए थे, इनसे पूछ लीजिए. जाहिर नाम लेने से निकाह का प्रॉब्लम बन जाता है ना. निकाह टूट जाता है नाम ले. अगर मियां बीवी, शौहर बीवी एक दूसरे का, तो निकाह टूटने का अंदेशा होता है ना. होता है ना. हाँ जी. मुझसे सुना है? अल्लाह. तो पहली बात, आपने कौन सा कोई
सारी दुनिया का इल्म हासिल कर लिया है, पहली दफा अगर सुन लिया है तो अच्छी बात है ना, कि नहीं आपको इत्तला मिल गई। नहीं टूटता? टूटता है या नहीं? अच्छा, पहली खवातीन और मर्द तो ऐसे ही कहते थे, पहले खवातीन और हजरात तो यूं ही कहते थे, नाम लेने से निकाह टूटे ना भी तो क्रैक थोड़ा सा आ जाता है। अच्छा, क्या बात है मिस आलमा। तो चले, बाकी हम इंशाल्लाह फिर कल